about investment strategy and different asset classes. So this session is all about discussion of investment strategy and different asset classes. And to get a hold over this, we are going to discuss different products. So I'm going to discuss about pension products as well, life product, health product, general product, so that if in any exam it comes to comment on investment strategy and different asset classes, you are able to comment. So this is a combined session for all students who are giving CP1 or SP exams. It's more relevant for CP1 students because उनको तो हर health का भी question आ सकता है, life का भी आ सकता है, general का भी आ सकता है. तो and SPs में you get specific question, but most of the students now who don't pick CP1 and they go directly with SP are not very comfortable with investment strategy and different asset classes, because जितना ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और डिफरेंट एसेट CP1 में ना, उतना डिटेल में किसी भी SP में नहीं है. सो अगर आपने पहले कोई SP दिया और उसके बाद आप CP1 देते हो, तो आपको एक्चुअल में वहां पर रियलाइजेशन होती है कि यार हमने SP में पढ़ा तो है, बट जिस लेवल का वो CP1 के अंदर एक्सप्लेन है ना, दैट लेवल इज नॉट देयर इन एनी ऑफ SP. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज कि आप पहले CP1 दो और उसके बाद SPs उठाओ, बिकॉज CP1 के जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग है ना, once you get hold over that, clearing SPs become relatively easier. And there are many students who pick like this कि they go for CP1 and for example SP2 कि अगला एटलीस्ट अगर हम दोनों का पढ़ रहे हैं और इससे हमारा कोई एक भी क्लियर हो जाता है, तो इट विल बी एक्टिंग एज अ मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ थिंग. अगर एक ही को लेकर बैठे रहेंगे और वो एक भी नहीं निकला तो दिक्कत आएगी. अगर दो से एक भी क्लियर हो जाता है तो, एंड इट एक्चुअली हैपेंस कि अगर आप खाली SP2 देते हो, लेट सपोज आई हैव सीन ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, वो नहीं निकल रहा, CP1 के साथ SP2 पिक किया और वो निकल गया. सो वी ऑलवेज एडवाइज यू दैट यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम SP का कोई भी टॉपिक है ना, उसमें अगर आपको होल्ड नहीं आ रहा, मान लो लेट्स सपोज आई एम आस्किंग यू कम एक्सपेंस. अब एक्सपेंस भी एक ऐसा टॉपिक है व्हिच इज एक्सप्लेन इन सो मच डिटेल इन CP1, और हम SPs जब पढ़ाते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मतलब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए. तो मैं बहुत सारी सपोर्टिंग वीडियोस इसलिए SP में ऐड करती हूँ CP1 की, सो दैट इन केस some of you are giving SP directly instead of CP1, तो at least you should have a good understanding of those topics. Now we have less time and a lot of questions to do. So let me start with the first question based on understanding of different asset classes and investment strategy. Pay attention, everyone. I know many students are here who are attending this session for the first time or who have joined just now only. So I am not expecting lot of points for you, from you basically, but I want you to understand ki what should be the level of points in these type of questions. Now, question says, Fund DB is a large final salary defined benefit pension scheme in country A, where the pensions and payment are guaranteed to increase at the lower of price inflation or 5% each year. List the main factors that would influence the long-term investment strategy of such a fund. तो अब क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है that it's a fund DB, large final salary DB pension scheme. Now, in case you have already studied before, basically these sessions are trending topics discussion lectures for II November 2024 students. But I have kept it open for April and May 2025 students as well, so that they can have a bit understanding of different topics that are there, and they can accordingly, when they are doing lectures or when they are revising the content, they can understand ki what should be the standard that is required. So the only motive of allowing April and May 2025 students in this session is that you should be aware of the questions, the level of questions and the level of points which is required from your side. But I am not expecting in the very first session only you would be able to give me the exact points. Even if you are able to give me for 4 marks 3 to 4 points, it works for me.
सो डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि भी मुझे पेंशन स्कीम नहीं पता या मुझे ये नहीं पता कि फाइनल सैलरी पेंशन स्कीम क्या होती है। ये सब कुछ हम बहुत ज्यादा डिटेल में अभी जब हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे अप्रैल में 2025 के लिए, हम तब वहां पर ये सब कुछ एड्रेस करेंगे। सो दिस, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि आई डोंट नो दिस थिंग। You should only be seeing each and every question ki okay, this is what is expected from me and I have to reach the standard in this coming 6-7 months. एंड फॉर नवंबर 2024 स्टूडेंट्स, बेसिकली अभी तो आपको सब कुछ आना चाहिए। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैंने ये टॉपिक नहीं किया या ये कुछ है। एट दिस पॉइंट यू शुड बी एबल टू कमेंट ऑन ईच एंड एवरी पार्ट. So Fund DB is a large final salary DB pension scheme in country A, where the pensions and payment are guaranteed to increase at the lower of price inflation or 5% each year. First part is asking, list the main factors that would influence a long-term investment strategy of such a fund. Keeping in view the liability profile of the fund, discuss the various asset types that might be appropriate for the fund to consider for investment. Country A has recently witnessed a significant increase in the inflation rate in its economy. Chief Investment Officer of the scheme expects that inflation rate in the country is likely to remain high in the short to medium term. CIO has therefore proposed changes in the existing asset allocation for both domestic and overseas investments. He has proposed a reduction in the equity and bond allocation both in domestic and overseas markets and increase the allocation in money market instruments. Discuss the reasons why an institution like DB Fund may at times prefer holding money market instruments instead of equities and bonds. तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको मैंने समझा, मतलब बता दिया। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। Try to attempt this question in next 10 minutes and frame certain points. And जो भी आपके points आ रहे हैं, just comment it in the chat section. After 10 minutes, we will start discussing each and every question कि आपके क्या points होने चाहिए. So now you have 10 minutes time to start with your understanding.
Guys, 5 more minutes. Everyone try to participate. It does not matter whether your points are correct or not. What matters is कि at least you are trying. So do try to participate. एंड अभी ये बहुत जनरल कंटेंट है कि अगर आपने नहीं भी अभी कुछ भी पढ़ा, स्टिल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस यू कैन आंसर दी स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस. 5 more minutes. Post that we will start discussing. Guys, let's start discussing answers in the chat section. Fund DB is a large final salary DB pension scheme in country A, where the pensions and payment are guaranteed to increase at the lower of price inflation or 5% each year. सो फाइनल सैलरी स्कीम क्या होती है बेसिकली, जिसमें आपको रिटायरमेंट पेंशन एंड पेमेंट, मतलब वंस यू हैव टेकन रिटायरमेंट तो उसके बाद जो आपको पेमेंट्स मिल रही हैं बेसिकली, वो कह रहा है कि जो पेमेंट्स हैं दे आर गारंटेड टू इंक्रीज एट 5% या फिर इन्फ्लेशन, दोनों में से जो भी कम होगा उस पे हम इंक्रीज करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट वुड इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सच अ फंड. It's a book work. You have chapter 14 in which we have multiple factors which are should be taken into consideration while designing investment strategy. So ये आपको सिर्फ general answer करना है, इसमें कुछ भी specific की requirement नहीं है. Nature of liabilities, term of liabilities, currency of liability, uncertainty associated with liabilities, level of diversification required, level of risk appetite, any tax implications of different asset classes need to be considered, current basically asset profile of the company, the flow of funds, the size of assets with you. So there are multiple factors. तो आप कोई भी एक normal point out factors कर सकते हो. List का मतलब है कि आपको सिर्फ list करना है, no explanation is required. आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि लिस्ट के क्वेश्चन में हम सिर्फ लिस्ट कर रहे हैं और डिस्क्राइब या डिटेल के क्वेश्चन में हम डिटेल में कमेंट कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आप लिस्ट के क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दोगे तो यू विल स्टार्ट हैविंग टाइम मिसमैनेजमेंट इश्यूज. Next part, keeping in view the liability profile of the fund, discuss with reasons the various asset types that might be appropriate for the fund to consider for investment. अब हमारी जो liability type है वो हम पहले ये समझते हैं liability type क्या. लाइबिलिटी टाइप कह रही है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा देना है उसको आपको इंक्रीज करवाना है. किस रेट से इंक्रीज करवाना है, या तो वो फिक्स 5% हर साल बढ़ेगा या फिर प्राइस इन्फ्लेशन मान लो 4% है 3% है तो उसके हिसाब से बढ़ेगा. तो मतलब मेरे पास फिक्स्ड फ्लो भी आना चाहिए प्लस मेरे पास इंडेक्स्ड फ्लो भी आना चाहिए in order to meet my liabilities. So what are the various asset classes? We can say we can consider domestic conventional government bonds because at least वो आपको फिक्स रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसे अपना फिक्स्ड वाली जो पेमेंट्स है वो मीट कर पाओगे. यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स क्योंकि वहां से जो रिटर्न आएगा, इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स में आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड रिटर्न आएगा. जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड रिटर्न आएगा वही आप यहाँ पे जो आपको इन्फ्लेशन रिलेटेड रिटर्न वापस करना है वो आपका मैच हो जाएगा.
or we can invest in equities because वहां से भी हमें real return आता है, and that can be a good match for meeting this index linked liabilities. We can consider investing in property also, because but in order to invest in property we need to understand the maturity profile of the company. अगर company already बहुत ज्यादा ऐसी stage पे है जिसपे सिर्फ retirees बचे हैं और active population बहुत कम है, तो उस point पर अगर हम लोग property पे invest करेंगे तो that might not be a suitable investment. We can keep cash, we can invest in certain money market instruments to meet our daily needs. So इस तरीके से you are supposed to commit. अब ऐसे questions जब आते हैं तो it's like a bonus question, because आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो भी आपने सीखा है इन टाइप के क्वेश्चंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, एंड एज एन एग्जामिनर वी हैव लेस मार्क्स, लेस चांसेस टू डिडक्ट योर मार्क्स, बिकॉज अगर स्टूडेंट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर्स बताए हैं, स्टूडेंट ने डिफरेंट एसेट क्लासेस बताए हैं, तो हम क्यों मार्क्स काटेंगे? बेसिकली एनी एसेट क्लास दैट कैन गिव यू अ फिक्स रिटर्न plus index link return is suitable in this case. Next, country A has witnessed a significant increase in the inflation rate in its economy. Chief Investment Officer of the scheme expects that inflation rate in the country is likely to remain high in the short to medium term. CIO has therefore proposed changes in existing asset allocation for both domestic and overseas investments. He has proposed reduction in the equity and bond allocation both in domestic and overseas market and increase the allocation in money market. So basically CIO ने क्या किया है? Changing in asset allocation, और उसने क्या किया? Reduction in equity and bond, मतलब इक्विटीज में कम पैसा लगाएंगे, बॉन्ड्स में कम पैसे लगाएंगे, और हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा पैसे लगाएंगे. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स विच आर गोइंग टू गिव यू लेस रिटर्न बट आर वेरी लिक्विड. तो हम वहां पे क्यों पैसा लगाएंगे? मे बी द लेवल ऑफ रिस्क इज करेंटली वेरी हाई. जैसे कोविड में था कि हम लोग इक्विटी में या बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगा रहे उस टाइम पे. वी आर एक्सपेक्टिंग डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन पीपल डू नॉट हैव that level of risk which is required to do in bonds or equities, and we are expecting a decline in bonds and equity prices, due to which we are more concerned in investing in money market instruments so that at least principal is safe. We are expecting depreciation in domestic currency because of weakening of domestic currency. We would expect bonds to underperform, and it's better to invest in money market instruments, or we may prefer to invest liquid cash because maybe we are facing some withdrawal constraints, and because of that it's better to keep some liquidity in order to meet your immediate outgoes. So answer that I have received is, Subodh says the main factors is risk appetite, expected return required, in which currency liability is denominated, form of pension, whether it's lump sum, individuality. So apart from fourth point, rest all the 3 points answered are well, Subodh. So considering this is the first time that you are appearing, 3 marks, 3 points वगैरह factors की बता रहे हो, तो it's okay. ठीक है. So see, first part was asking you to comment on factors, bookwork. Second part was asking you to comment on the assets which are suitable in this situation. So if you understand the characteristics of different assets, you can apply your understanding and can comment, okay, in this case, I need to work on fixed assets too, plus inflation linked assets too. And finally, third part was again bookwork, because you were supposed to comment advantages of money market instruments indirectly. So this was from chapter 8 to 10 and chapter 14, basically for CP1 students. For others, basically it is for you, it is not linked to any particular chapter. We have investment strategy as a chapter in both SP1 as well as in SP2, and वहां पर हम लोग इतना डिटेल में नहीं मतलब आपसे एक्सपेक्ट करते, बिकॉज वहां पे सिर्फ आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा लाइफ का प्रोडक्ट है या हेल्थ का प्रोडक्ट है, और आप बताओ इस केस में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कौन सी. ठीक है. Now I am going to come on specific life and health product. This was a pension scheme. So agar if we have any SP4 student being live right now, this question is valid for both SP4 and CP1 students. Now let's come to specific health and life understanding investment strategy.
Okay, next question for life product, again relevant for SP2 and CP1 students. A large life insurance company in the country has been selling immediate annuity products, fixed index annuity products, and single premium deferred annuity product with deferment period of 5 years and 10 years for many years. The company invests mainly in government bonds, corporate bonds, index-linked bonds, and cash to back its insurance liability and invest-free assets in equities. Company offers withdrawal benefit for its deferred annuity portfolio at any time during the deferment period and commutation on the date of vesting. Suggest reasons for the company's current investment strategy. प्रोडक्ट्स बताए उसने और अपनी करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बताई कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट करवाने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स और कैश रख रही है, और जो बचा हुआ फ्री एसेट्स है, मतलब विच इज नॉट लिंक्ड टू एनी स्पेसिफिक लायबिलिटी, वो उन्होंने इक्विटीज में लगाए और ये उनके प्रोडक्ट्स हैं। अब वो आपसे 6 मार्क्स में पूछ रहे हैं कि क्या रीजंस हैं कि उन्होंने पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इंडेक्स लिंक बॉन्ड, कैश और इक्विटीज में लगाया। So based on the understanding of different products in the question, comment on reasons for company's current investment strategy. 6 marks ka hai, 5 minutes just to frame 3 to 4 points. So quickly, 5 minutes to think of the points. Let's start discussing. A large life insurance company in the country has been selling immediate annuity products, fixed index annuity products, and single premium deferred annuity product with deferment period of 5 years and 10 years for many years. The company invests mainly in government bonds,
corporate bonds, index-linked bonds, and cash to back its insurance liabilities, and invested free assets in equities. Company offers withdrawal benefit for its deferred annuity portfolio at any time during the deferment period and commutation on the date of vesting. उसने सिर्फ और सिर्फ आपको ये कमेंट करने के लिए बोला है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब हम देखते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ लगा रखा है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सबसे बड़ा रीजन इन्वेस्ट करने का क्या होता है? या तो कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो मे बी इट्स अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड. Or company's risk appetite is relatively low and they want to invest in that particular asset class which provides safe return. So we invest in government bonds because we don't want to invest in risky assets. We want less return but a safe return which is not dependent on the situations in market. So that's the reason for government bonds. But you don't need to categorize it separately. This is for government, this is for corporate. You are supposed to come in generally all the points. Then corporate bonds, because they provide better return compared to government bonds. Why corporate bonds? Because the main products of company are annuity products. And in annuity products, we need to pay coupon payments at the time which is required. So we can just easily match our coupon payments by investing in different bonds. So the return of bonds can be used to pay coupon payments to the annuity providers, basically. Next is, why do we invest in index-linked bonds? Because we are providing fixed index annuity products. We are basically plus हो सकता है कि जो आपको annuity payment करनी हो that is linked to inflation. So index-linked bonds can help to meet those type of liability returns. एंड कैश हमने इसलिए रखा हुआ है बिकॉज किसी भी टाइम पर जब विड्रॉल बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जब बहुत ज्यादा मान लो प्रीमियम्स उतने नहीं रिसीव हो पा रहे और हमें पेमेंट्स बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमने कैश रखा गया. एंड फ्री एसेट्स relatively we are expecting less for this company because the majority holding is in government bonds, corporate bonds and linked bonds only, but still they are investing certain free assets in equities and so that they can have a good return. So equity में invest करने का सिर्फ ये reason है कि कहीं से तो at least हम लोग return maximize करें plus हमें एक थोड़ा real return भी receive हो रहा है. So this is the reason for this type of investment strategy. So both says fixed liability in annuity product, company know in advance expected payment they need to make. So this liability can be matched with fixed or index-linked bond. Need to keep cash as withdrawal can be expected to pay at any time. Government bonds are less volatile and safe assets. Corporate bonds could generate fixed interest. Index-linked bonds provide protection. In order to generate higher interest rates, are invested in equities. Cash could be maintained. So both your 2 points are okay. Vidhi, your points are okay, but I would expect better explanation for these points because अभी आपने क्या लिखा कि जैसे government bonds are safe or corporate bonds provide high returns. So try to somehow link it to the question कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि we're just telling the characteristic of each of these assets. It should not be that we are supposed to comment on the characteristics. It's like whatever assets we are provided to us, we are somehow linking it to the background. You don't generally comment on the characteristic. As of now, it is seeming from your answer that you are trying to comment on the characteristic. You need to just frame your points well. Your direction is right, but just more of framing is required. Rest, a good attempt. Okay, now let's move to next question. Okay, so see this question now.
A health insurance company is selling critical illness policy in the market, which provides a lump sum benefit on diagnosis of CI as specified in terms and conditions of the policy. The claim experience of the company has been favorable over many years, and therefore the portfolio has not been reinsured for a long time. Reinsurance committee has assessed the risk and asked the actuarial department to find a suitable reinsurer for managing this business. So only the first part we need to comment. Describe the different asset class held by insurer for managing the ALM risk in this portfolio. ALM means asset liability management. ALM ही करते हैं हम लोग when we are choosing assets based on a liability profile. That's basically asset liability modeling only that you are trying. That you need to choose those assets that the returns of those assets match with the proceeds that you need to pay on your liabilities. So, health insurance company selling critical illness policy in the market, which provides lump sum benefit on diagnosis of critical illness as specified in terms and conditions of the policy. Claim experience has been favorable over many years. Therefore, the portfolio has not been reinsured for a long time. Reinsurance committee has assessed the risk and asked the actuarial department to find a suitable reinsurer for managing this business. Describe different asset class held by insurer for managing the ALM risk in this portfolio. अब आपको सिर्फ एसेट क्लासेस बतानी है. 5 marks, 5 minutes, start attempting.
So let's start discussing health insurance company selling critical illness policy. अब देखते हैं कि क्या liabilities है. Lump sum benefit on diagnosis of critical illness as specified in terms and condition. Claim experience has been favorable and therefore portfolio has not been. तो basically critical illness policy में आपको liability क्या है, आपको सिर्फ ये समझो liability क्या है इस केस में, that you need to provide lump sum on diagnosis of critical illness. So what are the different asset class held by insurer for managing the LM risk? So both says we can invest in money market as liability can be expected to pay at any time depending. It's advisable to maintain some liquidity. This can be done by investing in money market. Perfect. Because किसी भी टाइम पर हमारे पास क्लेम आ सकता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा पैसा अपना इक्विटी या प्रॉपर्टी में बाउंड नहीं कर सकते. We need to invest in cash. So both whenever you are mentioning money market, you should mention cash and money market instruments. So it's important that we are keeping it in cash and money market instruments. Then you are saying event, it's unlikely that many policyholders develop critical illness, so company has an opportunity to invest in long-term assets such as equity. ये जो आपने लाइन लिखनी है ना, इसको एकदम लास्ट में लिखो, इससे पहले कमेंट ऑन अदर एसेट्स. So since we can say कि we need to pay lump sum and that lump sum can be fixed lump sum depending on policy condition, that lump sum can be index linked lump sum as well. So we can say that we can invest in government bonds also because at least they will provide you fixed return, or we can invest in index linked bonds. And if legislation allows, if our regulatory requirements allow, we can invest in equities also at least a certain proportion so that we are getting real return as well, plus at the same time we are maximizing our expected return too. And if we have lot of free assets available apart from meeting our liabilities and we want to deviate from the exact match strategy, we can invest a certain proportion in property as well, again to gain higher return and increase profitability. And we can expect that not all the policyholders will start claiming at the same time. So both your point is right, but you need to mention it once you have basically mentioned 3 to 4 different assets. So we can say cash and money market instrument, corresponding reason, government bonds, corresponding reason, index linked bonds, corresponding reason, certain proportion in equities. And then if we can deviate from the current match strategy, we can invest certain proportion in properties as well. So this is how you need to make points for these type of questions. जितना आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करोगे ना, जितना आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट, उतना आप लाइबिलिटीज उसकी समझोगे. प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा, इररिलेवेंट चीजों पे फोकस करोगे, लाइबिलिटी समझ नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गलत होगी. देखो एसेट्स तो हमें पता ही है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इक्विटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है हमारे पास, डेरिवेटिव्स हैं, कैश इंस्ट्रूमेंट्स है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, यही सारे एसेट्स हैं. बस हमें क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट में अपने एसेट्स को चेंज करना है. वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप फॉर द डे. Okay, so last question of the day. You are an actuary to a newly established final salary scheme in a developed country. The finance controller of the sponsor has asked you to provide a note on the funding and investment strategy. सिर्फ second part करेंगे हम. Outline the considerations for determining an appropriate investment strategy if the scheme is to be funded. So you are an actuary to a newly established final salary scheme in a developed country. Finance controller has asked you to provide a note. Again, this seems to be a bookwork type of question. Outline the considerations for determining appropriate investment strategy. अब इसी के साथ ना देखो थर्ड पार्ट लिंक्ड है. अगर ऊपर आपको कुछ कुछ फैक्टर्स ना समझ में आ रहे हो और थर्ड पार्ट आप देख लो तो कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. A new trustee to a DB pension has suggested the following assets. 25% वो कह रहा है प्लॉट में लगा दो, 25% फिजिकल गोल्ड में लगा दो, 25% in the property occupied by sponsoring employer, and last 25% in a portfolio of index linked bonds. और फिर आपसे वो रीजन पूछ रहा है कि ये कमेंट ऑन द ट्रस्टी सजेशन. सो बेसिकली दीज टू पार्ट्स आर लिंक्ड. सो अगर आपको समझ ना आए कि पेंशन स्कीम कहाँ का इन्वेस्ट कर सकती है, उसने आपको दे दिया, उन्होंने
उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। पहले पार्ट में वो पूछ रहा है कि क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे इन्वेस्टमेंट करते समय, दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं। सो स्टार्ट डूइंग दिस फॉर 10 minutes क्विकली। गुड क्वेश्चन।
Guys, let's discuss now. So you are an actuary to a newly established final salary scheme in a developed country. The finance controller of the sponsor has asked you to provide a note on the funding and investment. So first part we are not supposed to do now. Second part was asking outline the considerations for determining. हमेशा एक पेंशन स्कीम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं. देखो पेंशन स्कीम है तो बेसिकली एसेट प्रोफाइल, funding level of the scheme, matlab what's the assets, level of assets compared to your liabilities, the level of expenses we need to consider, liability profile we need to consider, maturity profile of the scheme we need to consider before going for an aggressive strategy. Then what the competitors are doing, level of diversification, expected return, tax implications, sponsor covenant कितना strong है, because जितना आपका sponsor covenant अच्छा होगा उतना आप risky strategy ले पाओगे. एक्सपेंसेस हमने मेंशन कर दिया, टैक्स इम्प्लीकेशंस मेंशन कर दिया, रेगुलेशन के क्या आपको बोल रहा है कि उस पर क्या क्या आपको करना है उसके हिसाब से. सो जब भी पेंशन स्कीम का क्वेश्चन आएगा ना, बस आपको पेंशन स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं. मतलब जैसे फंडिंग लेवल यूज कर लिया, स्पॉन्सर कोवेनिएंट, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. जस्ट ट्राई टू मेक योर पॉइंट स्पेसिफिक टू द बैकग्राउंड विच इज देयर इन योर क्वेश्चन. Next part was good one. A new trustee to a defined benefit pension scheme has suggested the following investments for the scheme's assets. देखो उसने जब क्वेश्चन के अंदर सेग्रीगेशन करी है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर में सेग्रीगेशन होनी बहुत जरूरी. तो आपका आंसर इसी तरीके से होना चाहिए. 25% इन प्लॉट और लैंड में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसके क्या फायदे नुकसान है. फिजिकल कोड में 25% करेंगे तो क्या फायदे नुकसान है. मतलब यू शुड बी गिविंग अ ब्रेक डाउन इन योर आंसर्स एज वेल इफ देयर इज अ ब्रेक डाउन इन योर क्वेश्चन. तो प्लॉट और लैंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके चांसेस ऑफ कैपिटल गेन करेंगे, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं आएगा जब तक लैंड पे कुछ जनरेट नहीं होगा, वो रेंट पे नहीं चढ़ेगी, तब तक आप लैंड, खाली लैंड लेकर क्या करोगे. सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन है. और फिर बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो अगर स्पॉन्सर कोवेनेंट अच्छा नहीं है और सारा का सारा यहाँ लगा दिया तो फ्री एसेट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिस्कीनेस बहुत ज्यादा है फिजिकल गोल्ड पे, प्लस आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन है, दैट टू डिपेंडेंट ऑन गोल्ड मार्केट. फिर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर, जो स्पॉन्सर कर रहा है उसी की प्रॉपर्टी पे आपने इन्वेस्ट किया है. तो अगर स्पॉन्सर बैंकक्रप्ट होता है तो आपका पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी खराब हो जाएगी. डाइवर्सिफिकेशन नहीं आई अगर आपने इस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए. पोर्टफोलियो ऑफ इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स, ये अच्छा है कि इट कैन बी यूज टू मीट योर लाइबिलिटीज एज वेल, कैन प्रोवाइड सफिशिएंट रिटर्न एज वेल. So sufficient if maturity profile is aging also, तो index link bonds is a good investment. तो इस तरीके से जब क्वेश्चन में सेग्रीगेशन है तो मेरे ऑटोमेटिकली जो मैंने पॉइंट्स बनाए, हमें ऐसे सेग्रीगेट करके पॉइंट्स बनाने. ये आपको प्रेजेंटेशन सीखनी है, बिकॉज लिख तो आप लोगे, आप लोगों को बेसिकली ये प्रेजेंटेशंस पे फोकस करना है कि अच्छा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट आर द की स्पेसिफिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो इसीलिए हम लोग लाइव सेशंस पे आपको ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दैट यू नीड टू अटेंड द लाइव सेशंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ओके वेयर एम आई मेकिंग मिस्टेक्स. अदरवाइज आप सिर्फ घर पे बैठकर अगर वीडियो ही सुननी है तो देन व्हाट्स द पॉइंट. और अगर आपने लाइव में पार्टिसिपेट भी नहीं करना तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग लाइव. आप लाइव आ रहे हो अगर तो लाइव में पार्टिसिपेट तो करो, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी की व्हाट्स द लेवल ऑफ योर पॉइंट्स एंड कैन अकॉर्डिंगली टेल यू की ओके यू नीड टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स. Now, so both says return required as future benefit is based on salary, so liability will increase with inflation. So it's advisable to invest in assets such as index linked bond, market condition, term risk appetite. So both return is okay. Market condition is not much relevant for pension schemes. तो अभी इतना ज्यादा इस पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आपको पेंशन कंपनी के स्पेसिफिक पॉइंट्स बताओ कि लायबिलिटीज आपने मेंशन कर दिया, रिस्क एपिटाइट मेंशन कर दिया, उनका करंट एसेट प्रोफाइल कितना है, उनके पास साइज ऑफ एसेट्स कितना है, स्कीम की एज क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है पेंशन स्कीम का. ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि रिटायरीज वर्सेस एक्टिव्स का प्रोपोर्शन कितना है. अगर हम नियर टू रिटायरमेंट है, मतलब स्कीम्स जस्ट मेच्योरिटी प्रोफाइल इज से 55 56, तो आपको पता ही है कि एक्टिव पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पर पैसा दे रहे हैं. तो उस पॉइंट पर तो वैसे भी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ही, हम उस पॉइंट पर ये नहीं बोलेंगे कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो बिकॉज यू आर जस्ट नियर टू पेमेंट्स ओनली. तो पेंशन स्कीम स्पेसिफिक पॉइंट्स बताना जरूरी है. बट स्टिल कंसिडरिंग गिवन यू आर गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दिस सीम्स टू बी एटलीस्ट यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, एटलीस्ट यू आर एबल टू फ्रेम पॉइंट्स, दैट्स अ गुड थिंग.
So with this, we wrap up this discussion. Now will be having next meet next week, and you will get your notifications accordingly. So these type of classes, these sessions, basically when I'm not focusing on any one particular chapter, but on different products and understanding, do try to attend as much live as possible. So with this, we wrap up for the day. Thank you, everyone.